very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Chadeshwar, and from today onwards, I would be teaching you English. So, welcome to our class for English. I hope that you have cleared your exams very well and scored good marks in your PT3 exam. So, let's move towards our term 2 syllabus, in which we are going to start with our course book, that is New Pathways, unit number 5, that is Man and Machine. And today we would be studying section 1, that is the Diamond Maker. So it's a story about a person who makes artificial diamonds. So before moving ahead with the reading and the explanation of the chapter, I would just like to tell you in brief what the story is all about. Okay. The narrator is getting relief from his business life by gazing at the river from the Thames embankment near Temple. And there is a view of Waterloo Bridge and the towers of Westminster. Here, someone who looks like a tramp starts a conversation with him. Despite his appearance, he talks like an educated businessman. He has a bag that appears of uncut diamonds, one which is as big as the tip of a thumb. He offers to sell it for £100, but the narrator is suspicious. The man tells him that he has spent years on the project to make diamonds. It was done secretly so that others would not copy his work and so that he could sell his diamonds without it being known that they could be produced artificially, and that too in large quantities. After his money ran out, he conducted his experiments in the cheap lodgings in Kentish Town and had various menial jobs. He finally succeeded while using an idea suggested by a French scientist whose experiments were very famous. And the French scientist was Gabriel Auguste Daubry. He put the mixture which might produce the diamonds together with dynamite in a cylinder, too strong to burst. However, as he inspected the results, a neighbor in the lodgings house thought that he was making a bomb and took him as an anarchist. Told him, and he told that person who was making the diamonds that he had called police. He abandoned the lodgings house, taking with him his uncut diamonds, and this left him in the state in which the narrator had found him. मतलब जिस कंडीशन में नरेटर ने उसको ढूंढा था वो वाली कंडीशन, homeless and carrying diamonds which he cannot sell without causing suspicion. The narrator thinks that the man's story might be genuine, that means it might be true, and gives him the business card. But although he has some communication with him for a period, matlab for some time, he does not see the man again. Reflecting later on the encounter, he wonders if the man is dead or will perhaps re-emerge and become famous. He wonders if he might have missed an opportunity, a business opportunity. Okay, so let's read the story, which starts with the narrator who was very tired with his work, and he kept on gazing at the embankment. So let's read this. It's a story about a scientist who has devoted years attempting to make artificial diamonds. That means he has spent many years of his life in making artificial diamond. I was in Chancery Lane at about 9 in the evening. After a hard day work, I had a little headache and was not interested either in entertainment or any more work. Now here the person who is being said that is the narrator of the story. Okay. What he was doing, he was in the Chancery Lane
and it was around 9 o'clock in the evening. After a hard day's work, means after working for a whole day and doing very tedious job, he had a little headache and he was not interested either in entertainment or any more work. That means he didn't want to work anymore and he was also not interested in entertainment, मतलब movies या ऐसा कुछ या फिर बाहर घूमने जाना. Okay, I decided to move away from the noise and go down to the embankment. So what he decided, that he don't want to work, he don't want to watch movie. So he thought that he would just go downstairs near the river, which would make him feel at peace. Okay, मतलब बिल्कुल आवाज़ से दूर, मतलब उसका जो काम होगा उसके आसपास काफ़ी noise होता होगा. So he decided to move away from the noise and go down to the embankment. Now you can see the meaning of the embankment over here. Sorry. It means a street along the north bank of the River Thames in central London. So this story is being said by the person who is living in the London. An embankment is the name of the street which is located along the north bank of the River Thames. Okay. And rest my eyes and cool my head by watching the multicolored lights upon the river. So he thought that he can just move away from the noise, move away from his work and go down to the embankment, that is the street name, right, near the river Thames. And he thought that he would rest his eyes, means close his eyes for some time and cool his head because he was having headache, right. इसीलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर अपना आंखें बंद करके आराम से उधर वो क्या करेगा, थोड़ी देर बैठेगा और उधर जो उसकी आइज़ है उसको सूद करने के लिए, मतलब वो सूदिंग देने के लिए वो क्या देखेगा वहाँ पे, ही वुड बी लुकिंग द मल्टी कलर्ड लाइट्स अपॉन द river. Though the arcs of the Waterloo Bridge, one can watch different colors of the light as well as the towers of Westminster. मतलब जो आर्क्स थे वाटरलू ब्रिज के, आर्क्स का मतलब एक शेप होता है, राइट, यू कैन से इट्स अ सेमी सर्कल. सो वहाँ पर वाटरलू ब्रिज के आर्क्स है, वहाँ से वो क्या देख सकता है, he can watch different colors of lights as well as the towers of Westminster. So Westminster is the government area near the Buckingham Palace. Okay. So he can see the different colored lights and also the towers of Westminster in when he got down near the embankment. Now suddenly another person came over there and he said, "A warm night," said a voice at my side. मतलब जो नरेटर था उसके बाजू में एक आदमी आके खड़ा हो गया and he just said, "A warm night." I turned my head and saw the side of a man who was leaning over the parapet beside me. Now what is parapet? A railing along the edge of a bridge. Okay. So वहाँ पे जब उसने घूम के देखा तो there was one person standing beside him and he was leaning over the parapet. मतलब he was holding that thing. Okay, the railing. It was a sophisticated face, handsome though tired and pale. So the person who was standing beside him, he looked sophisticated. Not by his clothes, only his face. उसका face कैसा था? Stylish, refined and complex looking. So he was quite handsome. लेकिन वो कैसा दिख रहा था? He was quite tired and pale. Pale means yellowish. जिसकी बॉडी में खून नहीं होता है उसको हम पेल बोलते हैं, ठीक है. I looked at him curiously. Would he have anything to tell me? He looked intelligent. So when the man suddenly started talking with the narrator, he looked at him curiously. Curiously मतलब with an anxiety, or you can say with an excitement. He was like, what would he like to tell me? उसके पास क्या है बात करने के लिए. और वो दिखने में कैसा था? He looked intelligent. Very warm, said I, but not too warm for us here. मतलब वहाँ का वेदर कैसा होगा? ठंडा होगा, right? It might be cold over there, but not that much cold. इसीलिए उसने बोला कि not very warm, that हम लोग इधर बैठ के बातें कर सकें.
No, he said, still looking across the water. It is pleasant enough here just now. So what did the man said? That no, it is warm, और at least अभी का वेदर कैसा है? अभी का वेदर काफ़ी pleasant है अभी के लिए. Just now means right now the pleasant is quite good. And what was he staring at? He was staring at the water. It is good. He continued with a pause. Pause का मतलब stop लेके बोलना, right? You might stop for a second and then start talking again. And he said that it is good to find anything so relaxing as this in London after one has been worrying about business all day. He took many pauses, मतलब उसके कॉमा ज़्यादा थे सेंटेंस में, ठीक है, मतलब वो बार बार रुक के बोलता था. सो ही सेड कि नो, अभी का वेदर कैसा है? प्लेजेंट है. एंड स्पेसिफिकली ये इतना रिलैक्सिंग जगह है कि आप अगर पूरा दिन किसी चीज़ के लिए वरी करते हो, इफ़ यू आर वरीड अबाउट समथिंग फॉर होल डे, एंड इफ़ यू कम टू दिस प्लेस इट माइट गिव यू अ सूदिंग इफेक्ट, मतलब आपको वहाँ पे पीस मिलेगा. सो दैट प्लेस, दैट इज़ एम्बैंकमेंट स्ट्रीट, that is a relaxing place in London for that person after he had been worrying about business all day. I don't know what one would do if it were not for such pacific corners. मतलब अगर ऐसी कोई जगह नहीं होती जो काफ़ी पीसफुल है और सूदिंग है. पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल और सूदिंग. सो ही इज़ लाइक इफ देयर हैडंट बीन एनी सच प्लेस then I don't know what would people do, right? Because why do people go over there? To get some peace, to get some relief from their daily routine. He spoke with long pauses between the sentence. और ये जो आदमी था, he was taking long pauses. मतलब उसको रुक रुक के बोलने की आदत थी. And that too he stopped for quite a while. And then he spoke again. And it was not like that he completed one sentence and then he took a pause. He used to take long pauses between the sentences. Sometimes I doubt if it is of any importance. I feel like throwing away everything, name, wealth and position, and do some small business. उसने क्या बोला नरेटर को कि I don't know whether the things which we are doing in our daily routine, मतलब जो हम काम रोज़ करते हैं वो किसी इम्पोर्टेंस का है भी कि नहीं, क्योंकि उसको क्या फीलिंग हो रही है? थ्रोइंग अवे एवरीथिंग, मतलब जो भी है उसके पास, नाम या वेल्थ या फिर उसकी पोजीशन जो भी है, वो सारी चीज़ें वो फेंक दे और कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर ले. दिस ऑल थिंग्स आर सेड बाय द मैन हु इज़ टॉकिंग विद द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. ओके. ही बिकेम साइलेंट. आई लुक्ड एट हिम इन एस्टॉनिशमेंट, मतलब आई लुक्ड एट हिम विथ सरप्राइज. वो रुक गया इतना बोल के, ठीक है. And what was the narrator saying? That he was quite astonished with the way he was talking and with the way he was speaking. और उसका जो लुक था और उसकी जो बातें थी वो मैच नहीं हो रही थी. It was quite opposite. Okay, उसका face was sophisticated, लेकिन if you see him in person, means उसका जो पूरा posture था, उसके जो कपड़े थे, he looked like a beggar. Okay. If ever I saw a man hopelessly poor, it was the man in front of me. मतलब जो नरेटर है वो ऐसा बोल रहा है कि उसने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा जो इतना पुअर हो सकता है और वो बिल्कुल होपलेस है. दैट मीन्स ही डजंट हैव एनीथिंग टू होप फॉर इन हिज लाइफ. ही वॉज रैग्ड एंड ही वॉज डर्टी. रैग्ड मीन्स हिज क्लोथ्स वर टोन्ड, ठीक है, उसके जो कपड़े थे वो पूरे फट गए थे. इट वर इन टू रैग्स. एंड ही वॉज डर्टी, अनशेवन एंड अननेम्ड. दैट मीन्स दैट ही हैड लॉन्ग बियर्ड. अनशेवन मीन्स and unnamed means he did not comb his hair. Okay. So he was looking quite dirty and he looked as though he had been left in a dustbin for a week. That means he might be smelling that bad कि narrator को ऐसा लग रहा था कि he was living in a dustbin for a week. And he was talking to me of a wearisome worries of a large business. Wearisome means
tiring kind of worries, right? Which made him tired. उसके जो troubles थे, उसके जो problems थे, वो कैसे थे, जो उसको tire कर देता है, right? And he was in such a condition that one cannot expect from him to talk about large business. उसका जिस तरह का ड्रेसअप था, right? वो और उसकी जो बातें थी related to large business, that were totally opposite. I almost laughed outright. Either he was mad or playing a sorry joke on his own poverty. That means that he was not able to understand his talks and he was about to laugh at him. या तो जो आदमी है who was talking to the narrator, he was mad or he might be playing a sorry joke for his own poverty. मतलब he is laughing at his own self. उसकी जो गरीबी है, जो पोवर्टी है, उसके ऊपर ही वो खुद हंस रहा है. Now again he started speaking, that man. The disadvantage of being in a high position, said I, is that you have to work hard and have to have a worry is a great deal. But the advantage is that you can help the poor. That gives a lot of satisfaction. So जो नरेटर है उसने क्या बोला कि अगर आप किसी हाई पोजीशन पे हो, राइट, इफ़ यू आर ऑन अ वेरी हाई पोजीशन, उसका डिसएडवांटेज क्या है, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड हैव टू वरी अ ग्रेट डील बिकॉज यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी दैट यू होल्ड, राइट. आपके पास जितनी ज़्यादा हायर पोजीशन होगी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ होगी, राइट. तो आपको उतना ही काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपके लिए जो मेंटल स्ट्रेन है वो बढ़ जाएगा, राइट. तो आपको वरी करना इज़ क्वाइट नॉर्मल इफ़ यू आर हैविंग सच अ हाई पोजीशन. लेकिन उस चीज़ का एडवांटेज क्या है, दैट यू कैन हेल्प द पुअर एंड दैट माइट गिव यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. ही लुक्ड एट मी एंड सेड, यू वोंट अंडरस्टैंड. तो जो आदमी था उसने नरेटर को क्या बोला कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. आफ्टर अ मोमेंट्स साइलेंस ही स्पोक अगेन. नो डाउट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज. यू विल नॉट बिलीव मी इवन व्हेन आई टेल यू, बट आई फील इट इज़ क्वाइट सेफ टू टेल यू and it will be a comfort to tell someone. I really have a big business in hand, a very big business, but there are problems now. The fact is, I make diamonds. Now, after listening to all this, the person started speaking again after keeping silent for a moment. What did he say? That it is quite strange, it is quite weird, right? हम जिसको जानते नहीं हैं उसके साथ हम बातें नहीं करते या फिर हम अपने ट्रबल्स शेयर नहीं करते हैं. हम अपने ट्रबल्स किसके साथ शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ. सो ही सेड दैट यू माइट बी फीलिंग दैट इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज दैट आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू वोंट इवन बिलीव मी एंड इट्स ओके, इट्स नॉर्मल दैट यू वोंट बिलीव मी. लेकिन उसको क्या लगता है, वो जो आदमी है उसको, कि इट इज़ क्वाइट सेफ टू टेल यू एंड इट विल बी अ कम्फर्ट टू टेल समवन. उसके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है अगर वो ये चीज़ किसी को बता दे. क्या बता रहा है वो उसको कि आई हैव अ बिग बिजनेस इन हैंड. मतलब उसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी बड़ा है, वेरी बिग बिजनेस. लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है. देयर आर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन माई बिजनेस. एंड देन ही सेज दैट व्हाट इज़ हिज बिजनेस. व्हाट इज़ हिज बिजनेस? टू मेक डायमंड्स. आई सपोज, सेड आई, यू आर आउट ऑफ वर्क जस्ट एट प्रेजेंट. सो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके लिए नरेटर ने उसको क्या बोला कि he thinks, he supposes that the person is out of work just at present. मतलब अभी हाल फिलहाल के लिए उसके पास कुछ काम नहीं है, right? So what does the person say? I am tired of people not believing me, he said with irritation. Irritation means he was quite annoyed with the thing that nobody is believing him. He is tired of those people who are not ready to believe him. Then suddenly he unbuttoned his wretched coat and pulled out a little canvas bag. It had a cord round its neck. So suddenly ये बोलने के बाद उसने क्या किया, he started unbuttoning. Unbutton करना मतलब अपने जो कोट के बटन्स है उसको ओपन कर रहा है. और उसका कोट कैसा है, इट वॉज क्वाइट wretched.
दैट मीन्स इट वॉज टैटर्ड एंड वोन आउट, मतलब फट गया था वो पूरा. उसने ओपन किया एंड ही टुक आउट अ स्मॉल कैनवस बैग. एक छोटा सा बैग निकाला उसने. एंड इट हैड अ कॉर्ड राउंड इट्स नेक. कॉर्ड मतलब उसको टाई अप करने के लिए कुछ यूज़ किया होगा, राइट. He opened it and took out a brown pebble. I wonder if you know enough to know what that is. And he handed it to me. उसने वो कैनवस बैग में से एक पेबल जैसी कोई चीज़ निकाली, ब्राउन कलर का पेबल मतलब स्टोन जैसी कोई चीज़ निकाली. और उसने क्या बोला कि आई वंडर मतलब आई थिंक और आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट कि ये चीज़ क्या है. और उसने वो चीज़ किसको दी? नरेटर को दी. Now, a year ago, in my free time in London, I had studied for a science degree. किसने साइंस डिग्री पढ़ी थी? नरेटर ने, ठीक है. When he was having a free time in London, he studied a science degree. So I had a bit of knowledge about physics and mineralogy. Now, mineralogy का मतलब होता है study of minerals, मतलब minerals के बारे में जो study करता है वो. This thing looked like an uncut diamond of the darker type. I saw it was too big and had the shape of regular octahedron. और ये जो चीज़ उसको हैंड ओवर की वो क्या थी? It looked like an uncut diamond and it was of darker color. It was quite big, right? काफ़ी बड़ा था वो. और उसका शेप कैसा था? ऑक्टागॉन जैसा. ऑक्टागॉन मतलब द स्टोन विच हैज़ 8 साइड्स, या फिर जो शेप होता है उसके 8 साइड्स या फिर 8 फेसेस होते हैं, ठीक है. उसको हम ऑक्टागॉन बोलते हैं. यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन लिखा हुआ है. इट मीन्स सेम. आई टुक आउट माई पेन नाइफ. पेन नाइफ मीन्स छोटी सी नाइफ जो पॉकेट में रखी जाती है. एंड ट्राई टू स्क्रैच इट. और जो पत्थर दिया उसको उसने स्क्रैच करने का ट्राई किया. बट ही वॉज नॉट एबल टू डू इट. आई वेंट अंडर द लाइट एंड ट्राइड इट ऑन माई वॉच ग्लास. The glass got scratched easily. So he went under the light, जो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होती है, वहाँ जाके उसने देखा अपने वॉच ग्लास से. And the glass got scratched easily. I looked at it with rising curiosity. Curiosity means anxiousness to know something. किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना. That is called curiosity. And it was rising. It certainly is rather like a diamond, but if so, it is a very big diamond. And where did you get it? So उसने क्या पूछा नरेटर ने कि it certainly looks like a diamond. मतलब उसका लुक कैसा है? डायमंड जैसा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है. ये जो डायमंड है वो काफ़ी बड़ा है. और वो उसको पूछता है कि where did you get it? So what did the man said? I made it, he said. Give it back to me. और उसने उसको बोला कि ये मैंने बनाया है और मुझे वापस दे दो. He quickly put it back in his jacket. I will sell it to you for 100 pounds, he suddenly whispered. This made me suspicious again. I felt it could just be a lump of some hard substance called corundum that also resembles to a diamond. If it was a diamond, how did he find and why should he offer it for 100 pounds? अगर वो डायमंड है तो इतनी कम कीमत में क्यों बेच रहा है, राइट. उसने तुरंत ही वो जो स्टोन था, या फिर यू कैन से इट्स एन अनकट डायमंड, उसने वापस अपने जैकेट में रख दिया. एंड व्हाट डिड ही से? दैट ही कैन सेल इट टू द नरेटर फॉर 100 pounds. ही सडनली विस्पर्ड मतलब एकदम धीरे से उसने बोला सडनली कि ही कैन सेल इट. और ये बात काफ़ी सस्पिशियस थी, राइट. मतलब ये चीज़ उसके नरेटर के दिमाग में क्या क्रिएट कर रही थी? डाउट्स क्रिएट कर रही थी. और उसको क्या लगा कि इफ़ ही इज सेलिंग इट फॉर सो लेस मनी, या फिर इतना चीप है वो चीज़, देन इट कुड नॉट बी अ डायमंड. इट कुड बी जस्ट अ लंप ऑफ सम हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड कोरंडम. कोरंडम का मतलब होता है अ नेचुरली अकरिंग ट्रांसपेरेंट मटीरियल, राइट. अ क्रिस्टलिंग फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, जो दिखता डायमंड जैसा है लेकिन वो डायमंड नहीं है. क्योंकि अगर वो डायमंड होता तो उसने कहाँ से ढूंढा और वो सिर्फ 100 pounds में क्यों ऑफर कर रहा है, राइट. We looked into one another's eyes. He looked honest. At that moment I believed it was a diamond and he was trying to sell. Yet I am a poor man and cannot waste 100 pounds.
No sensible man would buy a diamond by a dim light from a tramp, but a diamond of that size could cost many thousands of pounds. So वो दोनों अभी एक दूसरे को देखने लगे. और normally if a person is honest, you can see his honesty in his eyes, because if a person is lying, he won't be looking into your eyes. उसका आई कांटेक्ट कम हो जाता है अगर वो झूठ बोल रहा है तो. लेकिन वो जो आदमी है वो काफ़ी ऑनेस्ट दिख रहा था. लेकिन उस मोमेंट पे मतलब उसने बिलीव तो कर लिया जो नरेटर है कि वो डायमंड है और सेल करने का ट्राई कर रहा है. लेकिन नरेटर जो है वो काफ़ी पुअर है एंड ही कैन नॉट वेस्ट 100 पाउंड्स. और जो सेंसिबल होगा मतलब वन हु हैज़ विजडम, ऐसा आदमी कभी भी किसी के पास से डायमंड नहीं खरीदेगा, एंड दैट टू इन अ डिम लाइट, एंड दैट टू फ्रॉम अ ट्रैम्प. ट्रैम्प का मतलब होता है बैगर. उसका लुक कैसा था मैंने आपको पहले ही बताया, ही वॉज लुकिंग लाइक अ बैगर. तो कोई भी सेंसिबल या दिमाग वाला जो आदमी होगा वो इस तरह से किसी बैगर के पास से डायमंड नहीं खरीदेगा. और वो भी इतना बड़ा डायमंड जो थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स में बेचा जा सकता है, वो उसको 100 पाउंड्स में मिल रहा है. मतलब कुछ तो गलत है, कुछ तो फिशी है. ओके, I hope that you understood the story till here. We would continue the rest of the story in the next video. If you have any doubts, you can ask me in the live class.